Mr. Singh, you may please start, sir. Okay. Good morning, participants. I would like to welcome Mr. Venkateshan, who is the Regional Director, West and South of Ministry of Tourism, Government of India. He is here to address you for a few minutes after I say something about the course and other thing. So I welcome Mr. Venkateshan and all the participants for this program. As all of you must be knowing, I have heard the name of FHRAI, that is the Federation of Hotel Restaurant Association of India. And it is the third largest hospitality association of the world. FHRAI has started an initiative of it is the first institute of hotel management that was started by any association in the world. And that was started in 2005. We had an MOU with the Lausanne Hospitality in Switzerland. And now we are starting the institute with the bachelor's and hotel operation program. And along with that, because we are thinking of having the three kind of streams in the education. One is the regular education, that is for the youngsters in the bachelor and hotel operation programs. And the second program that we will have is for the skill development program, which we will be having in support of the Ministry of Tourism or through Skill Council. So the third stream that is also very important is to train the people who are already in the industry. हमारे देश में अभी ये जो है ये सिस्टम बहुत ज्यादा नहीं है कि जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको भी टाइम टू टाइम चेंज किया जाए. अगर हम यूरोप को देखें, यूएस को देखें, तो हम पाएंगे कि वहां पर इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट में लोग आते जाते हैं. कुछ साल इंडस्ट्री में काम किया, देन दे कम बैक टू इंस्टीट्यूट, दे गिव द फ्रेज बैक टू द स्कूल. They come to this institute, they learn the new things and then go back and implement it. हमारे यहाँ अभी जो है ये सिस्टम इतना नहीं है, तो रेगुलर प्रोसेस में तो नहीं हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन, चूंकि अब ये कोविड की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन का जो नया एक वो खुला है रास्ता, मैं जानबूझ करके हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि सब लोगों की समझ में आ जाए हम लोग क्या कहना चाहते हैं. तो हम लोग तीन तरह की एजुकेशन को सपोर्ट करेंगे. एक तो हम होटल मैनेजमेंट के यंगस्टर्स के लिए जो है वो डिग्री प्रोग्राम और होटल ऑपरेशन के प्रोग्राम चलाएंगे. उसके साथ ही हम स्किल डेवलपमेंट जो ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, 7th 8th 9th करके और आगे पढ़ाई नहीं कर पाए, उनको एंट्री लेवल पे इंटर कराने के लिए हम एक जो है शॉर्ट टर्म प्रोग्राम रन करेंगे इंस्टीट्यूट में. और तीसरा, जो ऑलरेडी लोग इंडस्ट्री में हैं उनकी स्किल को कैसे अपग्रेड किया जाए, रीस्किल कैसे किया जाए, उनको रिमोटिवेट कैसे किया जाए, उसके बारे में हम जो है वो ऑनलाइन या फिजिकल क्लासेज इंस्टीट्यूट में चलाएंगे. FHRAI इंस्टीट्यूट जो है वो ग्रेटर नोएडा में है और ये 7 एकड़ लैंड इंस्टीट्यूट को अलॉट हुई थी, जिसके अंदर इंस्टीट्यूट प्लस 160 सीटर बॉयज हॉस्टल एंड 70 सीटर गर्ल्स हॉस्टल है. अभी हमारे पास 2 फैकल्टी हमने ली है. एक ऋषभ मिश्रा है जो आज आपका क्लास लेंगे, एक आशिमा चटर्जी है जो नेक्स्ट उसमें जो है वो F&B और रूम डिवीजन का क्लास लेंगी. इस तरह के कुछ कोर्सेज हम लोग जो है वो ऑफर करने की सोच रहे हैं, जिससे कि जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उनकी जो है अपस्किलिंग या जो है उनको जो है टाइम टू टाइम अपग्रेड किया जा सके या उनके नई नॉलेज को ऐड किया जा सके. इसके अलावा अभी हम जो प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं आज, ये जो है फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड है एंड मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम द फूड प्रोडक्शन एरिया. तो इसमें हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको थोड़ा फूड प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में या शेफ की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाए. जैसा आप सबको पता होगा, पिछले 20-25 सालों में के पहले, आज से 1980 के पहले जो है होटल में शेफ को ज्यादा लोग जानते नहीं थे, लेकिन मीडिया या टीवी के आने के बाद धीमे धीमे शेफ्स ने अपनी एक पोजीशन बनाई. और आज जो है वो, अगर गलत नहीं होगा कहना कि शेफ्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू द जनरल मैनेजर इन द होटल. उसे कहते हैं होटल का एक फेस है शेफ जो है, और इसलिए होटल्स भी चाहता है कि उनके शेफ जो है वो सोशल मीडिया पर, टीवी पे अलग अलग उसमें आए या होटल में गेस्ट के पास जाएं, उनसे बात करें, उनकी रिक्वायरमेंट को समझें. मेरा कहने का मतलब शेफ्स की इम्पोर्टेंस जो है इस बीच और बढ़ गई है. तो आज ऋषभ मिश्रा जो है ये 4 सेशन लेंगे, जिसमें शेफ्स के बारे में, फूड के प्रोडक्शन के बारे में, हाइजीन के बारे में एंड ओवरऑल एक कोई पॉइंट डिस्कस करेंगे. हमारा ये कहना नहीं है कि आपको ये सब चीजें नहीं पता है. हमारा ये कहना है कि इन सब चीजों को अगर आपको
अगर नॉलेज कम है तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो, है तो आप उसको जो है वो रीजनरेट कर सकते हो वो चीजों को, जिससे आपका इंटरेस्ट इन चीजों में डेवलप हो। और यू कैन ऑल्सो try to learn new thing from the internet of the different websites which are available. When we were a student, I passed out from 1984 from Lucknow. At that time we have only one or two trade magazines. आज जो है बहुत सारी मैगजीन है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट पे बहुत सारी नॉलेज है। प्रयास ये होना चाहिए कि उस नॉलेज को आप ग्रेस्प करें, उस नॉलेज को आप लें और उससे सीखें। तो इसीलिए आई वेलकम रीजनल डायरेक्टर टूरिज्म हु इज विद अस एंड हैप्पी टू share his views on the initiative of FHRI and FHRI IHM. I invite Venkateshan sir to address to the participants. Thank you very much. Very good morning and namaste. Shri A.K. Singh sir, Mr. Himanshu Talwar, Chef Rishabh Mishra, Ms. Ashima Chatterjee, and dear participants. In fact, it gives me an immense pleasure to be here as part of this important initiative, which is the launch of the series of capacity building program by IHM FHRI. I would like to compliment Mr. A.K. Singh and his team for coming up with this program to upskill the workforce in the important segment of the hospitality industry. In fact, today, professional expertise is required for specialized vocations, and hospitality is one such field. In the initial years, as we know, it were the Foodcrafts Institutes and Hotel Management Institutes that were turning out manpower for the hotel industry. And then came the private institutions who have contributed immensely, especially in the smaller towns and districts where they are helping to augment the trained manpower for the industry. Today, also, we are at a stage where business models are being questioned. In fact, I've been visiting several hotels the last 1.5 years as part of my hotel inspection responsibilities, and I've seen how the things have changed in every department, including the kitchens. What was right yesterday is no longer right or valid today, and what was taught in the schools or what we learned over have to be adapted in this new normal. And in this background, it is very important that the capacity of the manpower, trained manpower, is also kind of upgraded so that it meets the demands of the industry. Today, the kitchens of hotel schools have state-of-art equipments. I know at some time when many of us who have passed out earlier, etc., would not even have access to such very specialized equipment, etc. And when we get into the industry and when we have to face working on such equipment, etc., again it's a challenge. So learning is a continuous process for all of us. Today, in fact, as I told, most of the organizations are also operating in a business environment of uncertainty. There is risk and complexity of external environment also, and there is pressure of international competition, and there is also this market globalization that is also forcing a lot of Indian organizations to match the global standards. Whatever the structure or business strategy, organizations are realizing that it's performance of their human assets that can make the difference between success and failure. That is why we see some of the hotels doing well, gaining the goodwill of the customers, and keeping the flag flying at all times. With increasing emphasis on technology, quality, and service, we are moving away from the mechanized workforce to an what they call something intellectualized one that needs competent and self-directed employees. And this can only happen when we kind of upskill ourselves and to meet the changing demands of the work situation. As such, no organization can ignore the learning and development needs of its employees without seriously affecting their performance in this rapid society. In fact, it is also well-known fact that the lack of trained manpower is the single most limiting factor for growth of the hospitality industry. I have seen this and experienced especially in the tier 2 cities and tier 3 cities where investment has come in terms of infrastructure, but they are not able to maintain or match the standards because of the manpower. So with this, I would like to conclude saying that it's a great opportunity for us
during this period of pandemic to sit at our homes or workplace and listen to the experts and upscale ourselves, because I believe learning has to be a continuous process. Just coming out of college and with a degree, getting into work will not help us move forward, and something that will differentiate us from our own colleagues and competition is the skill that we possess. With this, I now once again thank the organization FHRA IHM for inviting me, and I wish this series all the success, and I hope this initiative will continue for the coming years and soon also in the physical model. Thank you, sir. Thank you, sir, for your kind words. I hope that the participants must have understood the importance of these kind of program. And I will request them that since their mics are unmute, so please cooperate with us and they'll pay attention to the instructions which have been given. We understood that you are not the student of this college, so therefore we keep the session for 30-35 minutes in each Tuesday. And the next 3 sessions will be on Tuesday, 11 a.m. So please attend all those 4 sessions so that you are eligible and you should get a certificate for attending these sessions. These sessions are basically meant to upgrade yourself. Now I hand over the session to Rishabh to continue with the content. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Venkateshan sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Good morning, everyone. Good morning, chefs. Lot of overwhelmed. I've seen a lot of people with white uniform and everybody's there. And a good day. So good morning, everyone. Hope you all are in good health. Your family is safe in this pandemic era. I pray to God that we fight Corona successfully and we are back to work together in our busy kitchens with buzzing cuties and a lot of guests to serve. My name is Rishabh Mishra. I am a lecturer for food production at FHRI IHM. I'm a certified master trainer and facilitator. I have done my BHM from IHM Kolkata and have 10 years of experience as a chef and 4 years as accommodation. I'm really overwhelmed from the response coming from across the India. Even we have friends coming from Andamans. This is a certification program and the participants will be receiving certificates from FHRI IHM only after completion of all 4 sessions, which will happen in upcoming weeks. We are all familiar with FHRI, with the aim to provide quality manpower to the hospitality industry. FHRI has set up an institute of its own in the year 2005. Currently, the institute not only aims to nourish the building talents in the service sector, but also is included or inclined to support professionals in the industry to excel in the skills pertaining to their own area of interest. Having this thought in our mind, the institute, along with FHRI and its regional associates, have come up with this capacity building program to reiterate the basic skills that are required to delight the guests. Once again, I would like to congratulate you all for becoming a part of a beloved hospitality family. So what is hospitality? If we discuss about hospitality, we can discuss it or we can take it as an umbrella. हम उसको अगर चाहें कि उसको एक word में define करें, it's a large umbrella under which small industries are coexisting. It is kind of umbrella under which many organizations and hotels
of different nature coexist. They function together for a common purpose. एक बड़े से umbrella के नीचे small industries, hotels, resorts, bars, everything, lodging से लेकर आपके guest house तक, everybody is coexisting. They are working together for a common purpose. And that common purpose is hospitality. Even the Oxford Dictionary defines hospitality as reception and entertainment of guests, visitors, or strangers with liberality and goodwill. Therefore, hospitality industry can be broadly defined as the collection of organizations providing different facilities such as food and beverage, accommodation, tourism and travel, leisure, lodging, front office, and many more. हम इसे अगर ऐसे समझें कि आप या हम में से कोई भी किसी दूसरे सिटी घूमने जाता है या कुछ मॉन्यूमेंट्स चेक करने जाता है या फिर किसी बिजनेस पर्पस में जाता है, हम पहली बार जा रहे हैं तो हम एक ऐसा होटल चुनेंगे जो कि आपके रेलवे या फिर एयरपोर्ट के पास में हो, या हम वहां जाएंगे, चेक इन करेंगे, we'll order some food, beverage, we'll go outside, we'll take some car, we'll hire car, taxi, we'll go to monuments with our family, we'll hire a guide, हम guide को भी hire करेंगे, वो हमें समझाएगा क्या monuments हैं, फिर हम वापस आएंगे होटल में, we'll spend our nights and we'll go back to our own city. तो ये सब industries, चाहे flight हो, चाहे वो hotel हो, restaurants, guides, tourists, buses, cars, everybody is coming together to make our journey successful. And that is all about hospitality. That is all becoming part of hospitality. So now coming to hospitality, and the hospitality industry consists of a range of services providers that include bars, restaurants, lodging establishments. A wide spectrum exists within these categories. हम जब बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, इसमें बार से लेकर रेस्टोरेंट से लेकर everything is there, lodges, motels, hotels, casino hotels, resorts, everything is there. Fast food joints, to fine dining restaurants which are known for their food across India, those are all coming under hospitality. जब हम चूज करते हैं कोई होटल, तो पहली बार हमने चूज किया कोई होटल, वो शायद हमने उसकी लोकेशन के बेसिस पे चूज किया होगा कि वो एयरपोर्ट के पास है या फिर रेलवे स्टेशन के पास है. But when we continuously go to a city for business trips or we are regular to a city, then we actually हम जो होटल चूज करते हैं, that is basically based upon the kind of service we get. अच्छी सर्विस. जब हम खुश होकर जाते हैं कहीं होटल से, तो हम कोशिश करते हैं कि हम वापस आए तो उसी होटल में रुकें. And that is very much possible and very easy to do. It is very easy to retain a guest. We just need to take extra care of them. A happy guest will definitely come back to us. The staff who is working in a hotel, their morale boosting, their motivation is really important, because they are the people who make the biggest impression during the stay, which subsequently results in repeated business and clientele. So it is very important to have motivated staff, and that is why we are having this capacity building program, so that we keep our chefs motivated to who can prepare the best of food they can. One in every 4 new jobs were created in travel and tourism industry in the last 5 years, while the global economy grew by 2.5%. Global data showed that travel and tourism industry grew significantly at 3.5%. Tourism and hospitality contribution is more than 10.3% of the total GDP in India. These all data, जो ये data हम दिखा रहे हैं, these are all data of yesteryears, 2019, 20 के हैं.
And these data have shown that we have done pretty well in the past. हमने बहुत अच्छा काम किया पहले, and we are pretty much sure that we will bounce back after the pandemic ends. जैसे ही कोरोना कम होता है, हम वापस अच्छी तरीके से bounce back करेंगे और हमारा शायद इससे भी अच्छा डाटा हम शो करेंगे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का. So before moving to our first question of the day, who are chefs? एक कहावत तो आपने सुनी होगी, हम सब ने सुनी हुई है शायद, कि किसी के दिल का रास्ता उसके पेट से गुजर के जाता है. That means if you want to go into somebody's heart, you need to go through food. And I take pride as a chef. I take pride in saying that उस रास्ते का जो लाइसेंस है वो हमारे पास होता है, because we prepare good food. Now coming to our concerned department, food and beverage production, who are chefs? जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप शेफ हो, आप क्या काम करते हो, I just simply reply to them, we are people who have great imaginations. हम imagine करते हैं खाने को. We imagine food with different colors, different textures, different gravies, different sauces, different garnishes. We are people with great imaginations. हम साथ में मिलकर काम करते हैं as a team, as a brigade to achieve greatness. We work together to achieve greatness. We target to produce such a food. हम कभी-कभी इतना अच्छा खाना बनाते हैं. We target to produce such a food that can please the senses of the guests. And that is the main core purpose of being a chef. Whenever we imagine about a chef, we imagine a person in white crisp chef coat, long apron, and a chef cap. But we are more than that. हम लोगों को बताते हैं हम उनसे ज़्यादा हैं. We are tradesmen. We are trained professionals. We are trained professionals. We are proficient in all aspects of food. We can prepare Indian. हम Indian खाना बनाते जानते हैं. Continental, Mexican, Spanish, Oriental. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बंदा सिर्फ एक Oriental जानता है. We all know everything. We work in kitchen. We are proficient people. We prepare food so that we can make and we can serve happiness to the guests. And that is why I say we as a chef customize happiness. हम लोगों को happiness देते हैं. We customize, we change ourselves a little bit, we bend ourselves a little bit, we try customizing happiness. इससे मेरे को एक पुराना एक किस्सा याद आ गया अपने मैजिक ट्रेनिंग का. When I was looking after the buffet, एक regular guest, एक business client हमारे पास आते थे, and he was not very happy with the buffet. उनका रोज का एक ही कंप्लेंट था कि इनका खाना बहुत ज़्यादा it's like more luxurious food. He wanted something better than that. अब मैंने कई बार उनसे बात की, तब जाके समझ में आया कि उनको घर का खाना पसंद है, उनको घर का खाना चाहिए था. So we started preparing that kind of food, homely food, and serving him. हमने उनको IRD में खाना, घर का खाना भेजना शुरू कर दिया. खिचड़ी, दाल चावल, शोकाल सब्जी, कभी होम स्टाइल चिकन करी. हमने क्या किया, हमने उनको दिया. He was tremendously happy. He was very happy. Just because हमने थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया, थोड़ा सा खाने को चेंज किया, and the guest was happy. And I'm sure he must have been coming back to hotel after that. That's why we say we customize happiness. कहीं रेस्टोरेंट में आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, कोई गेस्ट आके बोलता है कि सर थोड़ा ऐसे करना है, थोड़ा सा स्पाइसी कम रखना है, थोड़ा चटपटा ज्यादा रखना है, थोड़ा ऑयली कम रखना है, थोड़ा मसाला ज्यादा रखना है. We can just customize our own food to make the guests happy. And that little bit of our हम जो थोड़ा बहुत करते हैं ना, थोड़ा बिट यहाँ वहाँ, that definitely makes a good, shows a good impression, that leaves a good impression on the guest, and वो guest हमारे पास वापस आएगा. Happy guests will always come back to us. अपनी तरफ से हम छोटे-छोटे काम करते रहें, थोड़ा सा गेस्ट पे ज्यादा ध्यान दें, या फिर फूड पे हम थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके जो कस्टमाइज कर सके उनके लिए. That leaves a great impression
one of my favorite chefs, Thomas Keller from French Laundry in California, what he says is when you acknowledge, as you must, that there is no such thing as perfect food, the only idea of it, then the real purpose of striving towards perfection becomes clear. To many people, happy. That is what cooking is all about. Matlab, there's nothing known as perfect food. We cannot prepare perfect food. Each and every person has a different liking. हर आदमी सब एक फूड, हर आदमी को परफेक्ट फूड नहीं लगेगा. किसी को कम तेल वाला खाना, किसी को अच्छा ज्यादा स्पाइसी खाना, उनके लिए परफेक्ट फूड है. We cannot prepare perfect food, but we can do little bit to make people happy. And that is what is essence to be a great chef. You do your little bit that makes people happy, and that happy person will definitely come back to you, to your own restaurant. One of other great chefs, Jack Pepin, said that I tell a student that the most important class you can take is technique. A great chef is first a great technician. If you are a jeweler or a surgeon or a cook, you have to know the trade in your hand. You have to learn the process. You learn it through endless repetitions until it belongs to you. हम जब शेफ हम बात करते हैं कि हम शेफ से हमारी बात है तो हम we are technicians also. We are technicians. We learn different techniques from boiling, simple boiling, to poaching, grilling, to confit, to sous vide, hibachi, infusions, rillettes, dungar, baghar. These are all different techniques, and n number of techniques we know, which we learn from very young age. हम बहुत छोटे से सीखना शुरू करते हैं techniques, and which we implement in our own creation. And it's very important. हम as a chef जब काम करते हैं, we are also technicians. With different techniques हम अपने खाने में add up करते हैं. उससे we can, अब उसको हम number of times replicate करेंगे, and we become proficient. That is the work of a chef. We all have seen this movie numerous times. One of my favorite movies from very young days. The rat had one thing the chef didn't have. I hope everybody has seen this movie, Ratatouille. The rat had only one thing that the chef didn't have. That was skill. Rat could imagine great food. Rat could mix flavors. Rat was proficient in cutting, chopping. Rat was very eager to learn because he was trying to save the book and everything. So he was eager to learn, which made him a better chef. So that skill made a difference between the rat and the chef. The rat was much more skilled and he was a better chef. So हम young students से बात करते हैं, हम budding chef से बात करते हैं, in the college also, in the like hotels also. A lot of people ask me कि क्या skills चाहिए अच्छे chef बनने के लिए? What different skills you need to become a great chef? Because in today's world, everybody wants to become Ranveer Brar or Sanjeev Kapoor. They want to blow up. They want to switch on their halogen lamps. But वो switch उनको मिलता नहीं है. इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, it is very important to switch yourself on. आप चमके एक halogen lamp की तरह. So we have jotted down some skills which are very important for a person to understand and become a chef. The first one among them is willingness to learn. हम अपने समय अपने टाइम में कुछ पढ़ते हैं, उसको कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंट करने की. So जब हम काम करते हैं किचन में, कुछ नया सीख के आते हैं घर से, that skill is very important.
willingness to learn is something that is very important for a chef. हमें पढ़ना चाहिए, लगातार पढ़ते रहना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए. कोई भी छोटा बड़ा किसी से हम कुछ भी सीख सकते हैं. Even from our home we learn from books, we learn from somebody else. हम टीवी देखते हैं, वहां से कुछ सीख रहे हैं. हम बाहर ठेले पे देखते हैं कुछ नया बना रहा है बंदा, उससे कुछ सीखते हैं. तो we should always be willing to learn. ये विलिंगनेस आपको एक अच्छा शेफ बना सकती है. विलिंग, आप टेक्निक्स लर्न करिए, स्टाइल्स देखिए कैसी है, डिफरेंट तरीके के. ये जो लर्निंग है ये आपको बहुत काम आती है. लर्निंग शुड ऑलवेज बी देयर. यू शुड ऑलवेज बी विलिंग टू लर्न. जेन्युइन पैशन. पैशनेट पर्सन, हर एक प्रोफेशन में पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बीइंग अ पैशनेट पर्सन, आपको पैशन ही आपको अच्छा अच्छा बना सकता है. सुबह शाम आपको मतलब सपने में आना चाहिए कि हाँ ये खाना है, ये बनाना है, वो करना है. दैट इज समथिंग दैट इज पैशन. आई स्टिल रिमेंबर फ्रॉम माय कॉलेज डेज, आई यूज्ड टू हैव फ्रेंड्स जो बात करते थे कि उनको सपने में भी खाना आ रहा है. लाइक दे यूज्ड टू मिक्स एंड मैच फ्लेवर्स, टेक्सचर्स. दैट इज जेन्युइन पैशन. विदाउट पैशन इट इज वेरी बहुत मुश्किल है शेफ बनना जब तक आप पैशनेट नहीं होंगे फूड के बारे में. ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, ऑर्गेनाइजिंग योर ओन वर्क, ऑर्गेनाइजिंग डे टू डे थिंग्स. बुफे लगाना है, मेन्यू सेटअप करने हैं, हमें इंडेंटिंग करनी है, सब कुछ एक साथ काटा है हमारे पास. उसके ऊपर ऑर्डर्स लगाने हैं, IRD सब कुछ है. तो वी शुड ऑर्गेनाइज आवर वर्क. Organization is very important. Organizing our own section, organizing our mise en place, our work is really important skill to have. Ability to skillfully multitask. अब बहुत सारे शेफ मेरे साथ हैं जो बोलते हैं कि हाँ हम सब मल्टीटास्क करते हैं. We all multitask every day. तभी शेफ हमसे बात कर रहा है, हम ऑर्डर लगा रहे हैं साथ में. That is multitasking. दो ऑर्डर, तीन ऑर्डर एक साथ लगाए. दैट इज मल्टीटास्किंग. बट मल्टीटास्किंग स्किलफुली इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप 3 ऑर्डर लगा रहे हैं एक साथ, 3 ऑर्डर बेस्ट होने चाहिए. दैट इज स्किलफुली मल्टीटास्किंग. क्रिएटिविटी. one person who wants to become a chef should be creative. Creativity is very important for a person. Creativity is an important skill to achieve. We are artists. We create food, we create garnishes, we create different sauces. And that is why we have a creative people. We need to create new things. और जब तक हम learn नहीं करेंगे, creativity नहीं आएगी. So these are actually interlinked. Learning, willingness to learn, and creativity is actually interrelated. Time management is one such skill that is very important in every aspect of life. हम time manage कैसे करें, कैसे अपना time पे आना है होटल या कॉलेज, अपने आप को सारा time management करना है, सारा work time पे खत्म होना चाहिए, सारा मीसा time पे खत्म होना चाहिए. We need to put the buffet on time. Guest जो IRD में या फिर कहीं पे ऑर्डर कर रहा है, उसके पास जो ऑर्डर टाइप पे आना चाहिए. That is very important. That skill, the time management skill is very important for a chef because हमारे एक मिनट की वैल्यू है. एक भी मिनट लेट हो गया खाना गेस्ट के पास, that's not good, a good thing. Teamwork. Then again teamwork, we have brigade in the kitchen. We all work together. हम साथ में काम करते हैं. हमारे शेफ्स हैं, हम खुद सेक्शन किचन में हैं, हमारे साथ और भी हम टीममेट्स हैं. We need to work as a team. Not only kitchen, even kitchen service, kitchen front office, kitchen housekeeping should have teamwork. Without proper teamwork, hotel cannot function. एक अच्छे टीम वर्क के साथ हम गेस्ट को सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बट बैड टीम वर्क विल नॉट हेल्प यू.
leadership skills. Leadership is one such skill which will be very helpful you to become or succeed as a chef in future. Leadership quality, leading your team from front, leading your team with examples will help you to become a good chef, a great chef. And these all skills will definitely help you to become a great chef one day. Apart from them, cutting, chopping skills, food tasting skills, mixing and matching skills, these are very important. But these are skills which a person can imbibe from very young days, even from college. So initially, we all think of becoming a great chef, but we need to act upon us, imbibe certain skills, certain qualities in us that makes us a great chef. In that, sometimes college plays a great role. Sometimes hotel plays a role. Sometimes our senior chefs play a role, but we need to have those skills. Basically, after this, we have another question for us: why we cook? Why we cook? A lot of times we think we are cooking, लगातार बना रहे, कुछ ना कुछ बना रहे, but हम बनाते क्यों हैं? Simple responses are, first response that comes is we make the food safe for consumption. We make the food much safer for consumption. As a chef, it is my duty कि जब भी हम guest को खाना serve करें, the best of food should be provided to the guest. We cannot give less than best food. The best of best food should be given to the guest. Safest food should be given to the guest. It is my duty as a chef to provide safe food. Undercooked food, raw food cannot be given. That is not good for you as a chef or as a hotel. आपका खुद का एक खराब होगा, नाम खराब होगा, होटल का नाम खराब होगा if the guest gets the raw food or a bad food. So it is very important to cook food above a certain degree, 65 degrees Celsius. उसके ऊपर जाने से food को cook करने से food sterilize होता है. You all know that. Above 65 degrees Celsius, the food gets sterilized. All the sporing, non-sporing bacteria get killed. Even fungus gets killed above that temperature. We pasteurize milk above 80-85 degrees Celsius to kill those bacteria that are in the milk. We boil the milk at 90-95 degrees Celsius so that milk gets sterilized. We can drink milk. It is very important to cook food before serving. Second is making food much more digestible. You can see in the picture, raw meat is there, the cooked meat is there. I will always prefer cooked meat. Why? Because cooked meat is looking better. It is more digestible. Okay. Complex foods, जैसे कि meats होते हैं, protein होता है, complex food है, that gets split. उनके जो fibers होते हैं वो उनको तोड़ दिया जाता है cooking time में. Okay, they become simpler. Human body can absorb and utilize simple food. Complex food को हमारी body absorb नहीं कर पाती है. Cellulose, this cannot be absorbed by the body. Same way, that is why we need to cook the food so that it gets simpler. The protein gets broken down and we can eat that food, making the food more digestible. Same way हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा nutrients अपने body में absorb कर सकते हैं. That is why we cook food. Then we increase palatability. We make the food look better. आप picture में देख सकते हैं, the grilled meat is looking much better. अब raw meat रखेंगे, grilled meat रखेंगे, the grilled meat would look much better. Taste आएगा, add होगा, texture add होगा, overall appearance change होगा food का. That will make it more appealing and more appetizing. That is why we cook food.
It makes the food look better. Even we can add garnishes to the food. That makes the food look better. तो हम as a chef try करते हैं कि हमारे किचन से जो भी खाना बाहर निकले, that should look very good. That should look the best because the guest is paying for that. Whatever food goes out of my kitchen, that should look pretty, that should be garnished well, and the best of food we should give to the guest. And that is why we cook food. Balancing our meals, introducing variety is also added adds to the food. Balancing means adding nutrients, adding nutritive value to the food. We add, while cooking, we add different vegetables, we add different things to the food, which adds nutritive value. Like हम gravy बनाते हैं, chicken gravy बना रहे हैं, उसमें क्या रखें, काजू का पेस्ट डाल दिया, बादाम का पेस्ट डाल दिया, that will add nutritive value. Sometimes we add some green herbs, vegetables, different vegetables. We add that are adding different nutritive value also. हम खाने में different nutrients add कर रहे हैं. We are balancing our meal. सिर्फ protein देना या फिर सिर्फ carbohydrate खाना is not good. The cooked meat, the cooked food or a meal will be balanced. That is why we always cook food. We add different ingredients to the food so that we can balance out. It also introduces variety in the food. अब एक ही चीज हम गेस्ट को बार बार रिपीटेडली खिलाएं, भिंडी, एक दिन भिंडी हमने कुरकुरी दे दी, एक दिन भिंडी कटी हुई दे दी, छौका भिंडी, भरवा भिंडी, तो दिस इज नॉट वैरायटी. द गेस्ट भी बोलेगा यार कितना भिंडी खिलाओगे हमें, बार बार एक ही भिंडी खिलाते आ रहे. सो कैन ऐड लॉट ऑफ वैरायटी इन द फूड बाय कुकिंग. हम जब कुक करते हैं खाने को, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन. So that is why we cook food, so that we can serve best of food to the guest. That is why we balance our food. We add variety, we change texture, we add flavor, taste, and that is all done while we cook the food. Today we are having the session till now. We are out of time now. So our way forward for next week is food safety, understanding contaminants. That will be held on 10th of June. You have any questions in your mind, please put it in the chat box. We are there to answer all your queries. In the next week, we'll be having understanding contaminants. After that week, we'll have safety, hygiene, preservation, and good practices. It's one of the important things for a chef. And the last would be general concerns and spirit of hospitality. These are 4 sessions. After completing the 4 sessions, you will be getting or receiving your certificates. So any problem, any question you have in your mind, please go ahead and we can answer those. If you have any questions you have in your mind, please go ahead and ask. Because these are things which are very important for a chef. The basic things, little basic things. We often forget them, भूल जाते हैं कभी-कभी. And ये सब छोटी चीजें हमें बाद में कभी-कभी लगता है कि यार ऐसा सोचना था, ऐसा कुछ और करना था हमें. If we have a question from Mr. Bharat Reddy, bakery chef. Sir, if me and my friend have a dream to set up a restaurant, what precautions we can take? What precautions? Precautions would be like your area, if you want to open a new restaurant or a bakery, whatever.
So you need to see the area first, what people like, what people dislike, what are the basic availability in the area. You must include those food products which are more popular. Those are available all the year round. Do not include those foods which are not available there. These are little precautions. Then FSSAI, today hygiene is very important after COVID. Hygiene will be very important. So kindly keep your kitchen and everything very hygienic. FSSAI license, important है उसके बाद. What of things are there? You will get your certificates via mail ID, I think. Any more questions you have? Rishabh, so thank you so much for your wonderful session. I believe we are running ahead of time now. I believe maybe, can we have the screen, please? Can you just, yeah. So I'll once again hand over the session to Mr. Singh for his concluding remarks. I thank to the participants that they have attended this session. This was the introductory session because we people are engaged so much in the kitchen that we forget to understand the importance of the innovation, understand the importance of the creativity and guest requirement, because handling guests is a very delicate matter. Guest को handle करना एक बहुत डेलिकेट मैटर है, जैसे कि इन्होंने एक ऋषभ ने भी एक एग्जांपल दे के बताया। और ऐसा कई बार हुआ है कि गेस्ट की छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं और जो है उससे हमारे बिजनेस पे इफेक्ट होता है, या हम रखते हैं तो गेस्ट हमारे पास आता है। क्योंकि आज के बिजनेस में गेस्ट को बुलाना जो है वो बिजनेस के लिए, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, होटल हो, बुलाना आसान है लेकिन उसको रिटेन करना बहुत मुश्किल है। आपको रिटेन करने के लिए गेस्ट को अपने पास जो है वो हर तरह की कैपेबिलिटी को यूज करना पड़ेगा। अगर रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में जो भी उसका डेक्योर है, बहुत से रेस्टोरेंट ऐसे हैं आपने देखे होंगे कि 3 से 4 साल में पूरा रेस्टोरेंट का डेक्योर बदल जाता है, थीम बदल जाती है, एम्प्लॉइज की यूनिफॉर्म बदल जाती है, बिकॉज एक तरह का खाना, एक तरह का इन्वायरमेंट, लोग कितनी बार आएंगे आपके पास। उसी तरीके से किचन एक ऐसे एरिया है जहाँ पर आपको जो है लगातार अपने को इम्प्रूव करना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा और नॉलेज के साथ साथ जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो चीजें हैं। और गेस्ट को ये देखना चाहिए कि भाई किचन या होटल या रेस्टोरेंट जो है वो हमें रिटेन करने के लिए, हमें लगातार अपने पास बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहा है, क्योंकि टफ कंपटीशन है। हम सबको पता है कोविड में क्या सिचुएशन है और कई बार बहुत से अननोन कंपटीटर मार्केट में आ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी क्लाउड किचन का नाम सुना होगा, लोग क्लाउड किचन बना लेते हैं, रेस्टोरेंट है नहीं उनके पास और होम डिलीवरी कर रहे हैं। खासकर इस कोविड एरा में जो है क्लाउड किचन से ने बहुत अच्छा बिजनेस कैप्चर किया है। उसको देखते हुए जो है कुछ रेस्टोरेंट चेन्स ने भी और इंडिविजुअल रेस्टोरेंट ने जो है वो इस तरह की जो है वो होम डिलीवरी स्टार्ट की है टू सर्वाइव। क्योंकि होम डिलीवरी के लिए आपको कोई बहुत प्रोमिनेंट जगह पर नहीं होना है, कहीं ऐसी जगह हो सकते हैं जो इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, रोड पे नहीं है, मेन रोड पे, तो आपका रेंट कम होगा, आपके एम्प्लॉइज कम होंगे और आपको जो है जो बिजनेस मिलेगा उस बिजनेस से आपका जो है वो प्रॉफिट, एक रीजनेबल प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक चेन है रेस्टोरेंट की यहाँ पर, उसने जो है वो 2019 में उसका 75% बिजनेस रेस्टोरेंट बिजनेस था, रिटेल बिजनेस जिसे कहते हैं, और 25% बिजनेस टेक अवे था। फिर कोविड आ गया, कोविड की वजह से जब बिजनेस डाउन होने लगा, दे कम आउट विद ए स्ट्रेटजी एंड अबाउट 3 months बैक उनकी जो डिलीवरी बिजनेस था दैट वाज 65% ऑफ द टोटल बिजनेस। और स्टोर का बिजनेस तो ज्यादा अभी रहा नहीं था, धीमे धीमे करते करते नाउ दे हैव रीच्ड टू द लेवल ऑफ 2019। इन स्पाइट ऑफ दैट द मोस्ट ऑफ द यूनिट्स आर क्लोज्ड। सो हमें लगातार कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा। वो सोचना ही जो है वो एक इनोवेशन है। हमें अपने आप को लाइव रखना पड़ेगा, चीजें नई नई सीखने पड़ेंगी, सोशल मीडिया से, इंटरनेट से, अपने फ्रेंड से। आप देखें जैसे भी इन्होंने नाम लिया रणबीर बरार का जो है, उसके अलावा संजीव कपूर जी का, बहुत से लोग हैं जो है, विशाल विकास हैं और कई लोग हैं। तो इन सब लोगों ने अपना करियर एक होटल से ही शुरू किया।
लेकिन कुछ समय के बाद जो है इनको लगा कि अब दूसरी फील्ड में हमें जाना चाहिए, और एक नई फील्ड, खास करके मिस्टर संजीव कपूर ने तो एक नई फील्ड ही क्रिएट की, जो है वो मास्टर शेफ की जो है। और उसके बाद उन्होंने अब कई और बिजनेस में उन्होंने अपने हाथ लगाए हैं, कई और काम कर रहे हैं, उसी तरह लगभग सभी लोग। तो आपको हमेशा जो है इनोवेटिव होना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि अपने आप को कितना बेहतर से बेहतर कर सकें। और उसके लिए सबसे पहले आपको पेशेंस चाहिए, और जो है वो लिसनिंग एबिलिटी चाहिए। जो हमारा सेशन अगला जो है रूम डिवीजन के और एफएनबी के लिए है, उसमें इंटरपर्सनल स्किल में, क्योंकि हम लोग की धीमे धीमे सुनने की क्षमता कम हो गई मोबाइल के आने से, जो है वो इसके अलावा जो है वो आईपैड आने से हम लोग सुनते कम है, टीवी के आने से देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो धीमे धीमे लिसनिंग एबिलिटी अपनी बढ़ाई पड़ेगी, लर्निंग एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, और ऑलवेज अपने को इम्प्रूव करते हुए सर्वाइव करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन. I again thank Mr. Venkatesan for sparing out time, because he is the regional director of West and South India. So I requested him, and he came forward and to attend this session and to welcome you for the session. Thank you very much for attending. Be there on the next session on next Tuesday at 5 minutes before 11, and must attend all the session. You will be benefiting. Once you attend all the session, the knowledge will be imparted, and at the same time you will also get a certificate, and you will develop a habit of listening and following those things. Thank you very much. Thank you.